ओके, ये देखिए भारतीय रेलवे की वजह से हम जो है फिलहाल okay. Hey guys, a very good morning. So today is basically okay Chetak. So today is basically the very first day. Hey, hi. So today is basically the very first day in Dibrugarh. तो डिब्रूगढ़ is basically तो मेरा घर है. This is basically my hometown. But as far as work is concerned, so this is the very first day of my work in Dibrugarh. এইটো ইয়াতে চাবিটো লাগি আছে দেখোন. तो देखिए खेली मेली के लिए चलिए तो फिर आज चलते हैं. तो बेसिकली तो रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन बिकॉज अभी ये पूरा का पूरा ब्लॉक रोड होने वाला है. तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न द रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन. तो बेसिकली द रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन और and yes, this is our रास्ता जो है थोड़ा सा ख़राब है, जिसकी वजह से हमें दोनों हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा है. जैसे कि आप देख सकते हो मेरे राइट साइड पे जो है दैट इज़ द डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन. Okay, so basically this is the Dibrugarh Railway Station, as you can see, and this is one of the very cleanest railway station in Assam, in the entire Assam. It's one of the very cleanest. ये फाटक का जो है मेरा ज़िंदगी से कब जाएंगे आई रियली डोंट नो. अरे यार फाटक. चलिए चलते हैं और ये है मेरा सेकंड फेज ऑफ द रोड. एक बार एक बढ़िया सा रोड मिलने के बाद ये मेरा रोड का सेकंड फेज है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े गड्ढे मिलेंगे आपको. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज नॉट द प्राइमरी.
GoPro, stop recording.